Okay, everybody, welcome to the session today. It's a very, very interesting session, one of my favorites, I would say. And that is because it is about gut. That is something I'm particularly extremely fascinated about. मेरे लिए सबसे ज्यादा important topic है. Ultimately, सारी चीजें इसी से drive होती हैं. So I would expect um, you to have your family members, whoever, come and attend the session. Try to understand as much as possible from the session. And if you have any questions, please write in the chat box. I will try to take it up. Okay, let's begin. Okay, so today's session is on gut-brain connection. I think this word gut is very common now. ये बहुत ज़्यादा common होता भी जा रहा है. I think a lot of people already know about this word that gut is very important, especially when it comes to neurodiversity. We do hear that there is something called gut brain connection, gut healthy rakho. It will also help the brain develop better. Let's try to understand its meaning kya hai, what is gut, and what are those foods that can help to keep your gut healthy. But before I begin this session, I would want to take one moment once again to thank the Tata Power Trust, NIPED, and Pay Attention program for this extremely valuable session and these series that they provided us an opportunity to present to and for you all to attend. Um, I don't think I've ever seen such an opportunity ever. We have worked with many, many organizations, but with such devotion and dedication and interest, I haven't seen any organization putting a focus on neurodiversity and especially autism in particular. So thank you to these organizations for giving all of us a chance. Once again, there will be a link on the chat bot. Please join the WhatsApp group. We keep posting regular updates. और हम जो भी रेसिपी या कुछ भी चीजें आपको बताते हैं उसमें if parents try it, they can post photos. And if you have any questions, वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. I will try to do the session in mix of Hindi and English. I understand from a little bit of feedback we took from you कि some people prefer Hindi, some people prefer English. I'll try to keep it as neutral as possible. Um, if you feel um, that there is something in particular जो आपको नहीं समझ आया, you did not understand, please type and I will definitely answer that. So, gut health and neurodiversity. In this whole session, I will try to focus on three main areas that how will gut health impact neurodiversity through mood, which we say ADHD or hyperactivity, through focus and learning, when we say ki there is learning difficulty or there is lack of speech or lack of attention span, and then digestion and food sensitivity. Normally we do say कि एक ऑटिस्टिक बच्चे का डाइजेशन वीक है या उसको कॉन्स्टिपेशन है या उसको फूड सेंसिटिविटीज हैं या फूड एलर्जीज हैं. Okay, let's begin with this. What is gut? It is a word, another word used for digestive system. एक बारी हमने खाना खा लिया, हमारे स्टमक में पहुंच गया, उसके बाद से लेके जब तक वो डाइजेस्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाके लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे पार्ट को गट कहते हैं. इसका मेन काम यही होता है, इट हैज टू ब्रेक डाउन फूड. इन द लास्ट टू सेशंस वी अंडरस्टूड अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ये कोई भी खाना आप खाते हो, आपने रोटी खाई फॉर एग्जांपल, उसको ये ब्रेक डाउन करेगा थ्रू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर एंड वाटर, एवरीथिंग. And whatever nutrients it is able to break it down into, जिन भी nutrients में break down करेगा वो nutrients body absorb करेगी. और जो भी waste बचता है वो body से बाहर चला जाता है. It is excreted from the body. So what happens अगर आपका gut नहीं ये function कर पा रहा है, if your gut is not able to digest, तो आपका digestion खराब होगा. You may have loose motions, which is leaky digestion. जब nutrition absorb नहीं होगा तो there will be no growth in the body or in the brain. And if you're not able to get rid of the waste, then it becomes toxic for the body. तो gut को healthy रखना कैसे है? What is the secret of keeping the gut healthy? एक बहुत simple सी चीज है. You may have heard also that our gut has good bacteria.
जितने ज्यादा गुड बैक्टीरिया होंगे उतना हेल्दी आपका गट है. So one very simple rule of thumb is to have good bacteria which are way more than the bad bacteria. तो ये कैसे करोगे आप? How will you do it? You can do it by one very simple thing, which is eat the food that your gut loves. आपके गट को जो खाना चाहिए आपको वही खाना है, जिससे उसके गुड बैक्टीरिया और डेवलप हो पाए और ऑल हेल्दी रहे. तो व्हाट आर दीज फूड्स? ये प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स हमने बहुत सुना है, ये होते क्या है? तो दिस प्रीबायोटिक इज अ फाइबर. इट इज अ फाइबर जो आपका बैक्टीरिया खाता है. इट इज द फूड फॉर योर गुड बैक्टीरिया लिविंग इन द गट. एंड प्रोबायोटिक वो फूड होता है जिसमें ये बैक्टीरिया होते हैं. तो देर आर सम बैक्टीरिया विच आर ऑब्वियसली इन योर बॉडी, but there are some foods also that have probiotics which have these bacteria. आपको दोनों चीजें लेनी चाहिए. Probiotics fermented food में होते हैं, and I think every part of India, which Rupali ma'am will also share with you later in her recipes, that most of the part of India, they have their own unique fermented recipes. I'm based out of Bangalore right now, so I know कि यहाँ पे idli dosa batter is fermented, so that's a great food for the gut, and it also has probiotics. It also has good bacteria. Okay, let's try to understand this little bit more. This should be your key takeaway. Okay. The good and the bad bacteria of the gut. How many good bacteria do we have? We have trillions of good bacteria, or almost 300 to 500 variety of bacteria. Please keep in mind, एक bacteria नहीं है ये. There are 300 to 500. Commonly 500 होता है, but the range is 300 to 1000 kind of bacteria that your body needs. जितनी variety होती है उतना beneficial. The more variety of bacteria you have, the better healthy gut you will have. And let's say for some reason your bacteria became less or they died. How soon can you make them? You can make them in just a few hours. So if you decide today, after today's session, that I have to fix the gut of my body or of my child, you can start today, and by the end of this weekend, you will start seeing changes. So agar if we are born with good bacteria, what happens to those bacteria? How do we end up killing them? वो मरते कैसे हैं? वो खत्म कैसे हो जाते हैं? उनका सबसे बड़ा रीजन होता है, in case of children, the two reasons that we have seen is one, medicines. When children eat a lot of medicines, especially antibiotics, that is one reason that reduces the quantity and the quality of good bacteria. Second is sugar. Excess sugar or processed food intake also results in killing these good bacteria. There are three more reasons that I've written down. Make sure a child has great sleeping habits and is as much possible away from pollution. So all these things will kill good bacteria, but all these things will also make bad bacteria. So if your child is eating a lot of processed food, high sugar, not taking good fiber, eating a lot of medicine, that is also creating a lot of bad bacteria in the body. So what happens? This slide, if some of you are watching on the phone, I know it will be tough, but I will try to just tell you that how are these different factors impacting your gut health. On a very high level, I will tell you that if when you eat the wrong food or when you don't take a lot of fiber, what happens is the number of bacteria come down, the variety of bacteria come down, and your gut becomes very weak. एक आपकी गट की लाइनिंग होती है, एक शील्ड होती है. Your gut has a shield that becomes thinner and thinner. When you start taking high sugar food also or processed food, that is what happens. And when that line becomes thin, that shield, that gut lining becomes thin, the body's ability to fight against infection, which means right now the shield was protecting my gut against any infection. वो infections होने के chances बढ़ जाते हैं, which means your immunity of the body goes down. And the same things happen when you eat a lot of medicine, when you don't sleep well. One very interesting fact here that I've written is artificial additive. This is extremely important for children because if you notice in a day, अगर वो ketchup खा रहा है,
कोई प्रोसेस्ड चीज खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क पाउडर्स, ऑल दीज थिंग्स विल हैव आर्टिफिशियल एडिटिव्स. Everything, even one spoon, is resulting in making that gut lining thinner and thinner. One again very important point, if the child is not taking enough water, it is again resulting in weaker gut health. Infections के chances बहुत बढ़ जाएंगे. Lastly, not true for a lot of kids, but overeating. Overeating also makes the digestion of the gut extremely weak, and in the end, वो gut की health को impact करता है. ये एक स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई. आई थिंक दिस विल मेक इट वेरी इजी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हियर दैट आई वांट यू टू गो बैक विद. बस आप ये समझ जाओ एक बार, दैट अगर आपका गट वीक है, अगर एक बच्चे का गट वीक है, तो वो एक पिकी ईटर होगा. ये टर्म आजकल बहुत कॉमन है कि मेरा बच्चा बहुत चूजी है खाने को लेके. वो क्यों है ऐसा? उसके रीजंस ये है कि कोई चीज कभी वो खाता है, उसको सूट ही नहीं करती. टेस्ट को साइड में रखो, बट उसको कभी कभी चीजें सूट नहीं करती हैं, एलर्जीज होती है. एक वीक गट के होने से वो बहुत पर्टिकुलर हो जाता है, चूजी हो जाता है फूड में. व्हेन द चाइल्ड इज अ पिकी ईटर, तो वो वेराइटी ऑफ फूड नहीं खाता. जब वेराइटी नहीं खाता, तो न्यूट्रिशन इज लेस इन द बॉडी. व्हेन देयर इज लेस न्यूट्रिशन इन द बॉडी, obviously the immunity of the body will be low. When the body's immunity is low, the child will fall sick frequently. And when that happens, sari ki sari energy of the body goes into getting the body fixed, and less amount of that energy goes into growing the body, growing the brain. So when the child falls sick, often there is delayed brain and body development. One very interesting thing that happens when the gut becomes weak, and why do children become picky eaters, is this: that when the gut is weak, our body starts reacting and becoming very, very sensitive to food items. And that is why our children become food sensitive. उनको bloating हो जाती है, acidity होती है, vomiting होती है, leaky gut होता है, diarrhea हो जाता है. और our body's immune system becomes very weak because the gut has become weak, कि उसको समझ नहीं आता, even when the body is eating good food like peanut, वो overreact करता है, which means allergy create करता है. The body behaves as if it is allergic to peanut. So if the gut is extremely healthy, तो allergies कम होंगी. Okay, I have a quick quiz, and I wish that some of you can just answer this on the chat bot. How many good bacteria does a gut have? So Avik ji, actually the answer is right. This is variety of bacteria. How many bacteria does the gut have? Trillions. Way more than billions. Trillions, yes. Trillions of good bacteria. Yes. My second question. How soon can you make a new bacteria? How soon can a body start making new bacteria? Yeah. In as less than 24 hours, in just a couple, yes, in just a few hours, or at max a couple of days. Yes. Great. Let me go back to sharing. Yeah. Okay, good. Okay. Now, a lot of us have heard this, that gut is also called a second brain. But why? This is very interesting. Look at the image here. This image has been generated by AI, but I am trying to show you literally how a gut and a brain would be connected in our body. And that vein that you see, that nerve that you see connecting them, is called vagus nerve. So gut and brain are connected by a super highway called the vagus nerve, and it is able to send messages to each other through this. And that is why at times you feel that I have this gut feeling, I can feel it in my gut. So at times when you're nervous and you just rush to the washroom. एग्जाम से पहले स्पेशली बच्चों को कुछ तो पेट में होता है,
That is because your gut and your brain is connected. And the same happens when you eat something very favorable. आपका mood अच्छा हो जाता है. So gut and brain are actually connected, and next time you should remember that it's connected by a nerve called vagus nerve. Why is gut health extremely important when it comes to a neurodiverse child? Now, here I will specifically talk about brain. I've already spoken about food sensitivity and food allergies. Now we have come to why, in particular, gut is important for brain. Gut helps make these chemicals, and these chemicals, please keep in mind, they're extremely important. Gut is producing these chemicals called serotonin and dopamine. And we have heard about this, and I've mentioned these in my previous classes. सेरोटोनिन वो केमिकल होता है जो एक बच्चे को हैप्पी रखता है, काम रखता है. डोपामिन वो केमिकल होता है जो एक बच्चे को मोटिवेट करता है टू लर्न न्यू थिंग्स. And this is something you should remember. 90% of वो happy chemical, वो happy hormone, हमारा serotonin hormone gut में बनता है. Our gut makes 90% of that hormone. Now imagine if your gut is not healthy, this happy hormone will not be made as much. तो आपको बच्चा बहुत tantrum में दिखेगा, aggressive दिखेगा, angry दिखेगा, sad दिखेगा, low दिखेगा. So keeping the gut healthy and happy is very important for your child to be happy. Second point. When the gut is not healthy, it will cause mood swings. It will result in anxiety, and it will also hence result in trouble learning. This is because of dopamine. So gut and brain connection is absolutely real. Keep the gut healthy to make sure that the brain is healthy as well. Now, I will go through the 5 parts. You all know I've always used this image because I am from the very first day I'm trying to teach you these 5 parts of the brain that we will particularly focus on. Now, every part related to gut. Prefrontal cortex, you know, is important for making decisions, for attention, for planning. And what the gut produces serotonin, which is that happy hormone which keeps the child calm and focused. So, what should you eat? What should you give your child so that this happens? So, foods like banana, nuts, and high fiber foods and fermented foods are required. Whenever you will give this, you will notice that your child is more focused and calm. Foods that will enable high attention and low hyperactivity will be omega 3 rich foods. And I have seen this in my own children. Whenever they eat extra sugary snacks in very high quantity, I see their hyperactivity go up because that suddenly upsets their gut. Healthy gut will also absorb nutrients better, which means अगर gut absorb कर रहा है nutrient, तो energy release हो रही है body में. So when gut food or the gut has direct impact on energy, on mood, and on self-control, which means that if you're giving foods like oats, dal, seeds, तो बच्चे को एक constant energy मिलेगी, उसके mood swings नहीं होंगे. Amygdala. All of you know it is the emotional center of our brain, which means कि एक बच्चे के emotions को process करने के लिए. Again, the same chemical serotonin, which is being produced in the gut, which helps to keep the child relaxed. The foods that will help here to reduce the anxiety and stress will be banana, dahi, dal. क्योंकि ये सारे वो chemicals release करेंगे. Emotional balance maintain करने के लिए fermented foods, idli, dosa, dahi, kanji will be very, very useful. Processed foods again will worsen stress. This is again a very beautiful takeaway. Gut also, a healthy gut will always help to stabilize blood sugar, which means कि बच्चे का tantrums, meltdown. Meltdown is such a common word we hear in especially autistic children. So any food good for the gut, which is slow digesting, foods like oats है, दलिया है, quinoa मिल जाए आप तो quinoa ले लीजिए, whole grains, refined grains नहीं, ये सारे उनके tantrums को control में रखें. Now, gut health for insula, which is about internal body awareness, कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं किसी के साथ सोशली कैसे बिहेव कर रहा हूँ. ये बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे पास that my child is not able to behave well socially, is not calm socially. So please keep in mind, maybe try giving foods which are rich in fiber, like beans, dal, cashews, kaju. It helps to build emotional connection.
Sensory processing. Now, we know that these children are sensory seeking. They do have sensory overload. To manage that, you should try to give foods, अगर आप non-veg खाते हैं, then fish and eggs, and different kind of berries जो इंडिया में मिलती हैं. You should definitely avoid artificial additives. कोई भी gems, कोई भी chocolates आती हैं जिसमें colors होते हैं, बहुत आती हैं. केक के ऊपर sprinklers आते हैं which are full of colors. Please avoid any colorful thing, any artificial additive. जितने भी milk products कहीं भी आपको नंबर दिखता है INS, anything that is being created in the lab and वो food का नाम नहीं है, वो आप अपने बच्चों को मत दीजिए. It will directly disturb their emotional balance. एंड लास्ट पॉइंट विच आई थिंक इज एक्सट्रीमली यूजफुल इज मैग्नीशियम. आप में से बहुतों को पता होगा कि कोई भी डाइट रिच इन मैग्नीशियम जो कि हरे पत्तों में होती है, ग्रीन लीव्स में, ओमेगा 3 एंड प्रोबायोटिक्स मतलब फर्मेंटेड फूड, इट विल हेल्प टू रिड्यूस सेंसिटिविटी. आपके बच्चे जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं उसमें बहुत हेल्प होगी. Last part of the brain, which is cerebellum, which is about movement and balance. You and I know that these children, they uh, at times have difficulty in forming that movement and balance. So to get physical coordination and motor skills, you definitely need a healthy gut. एक unhealthy gut में जो nerve के signals हैं to control movement, they become slow. A gut is not able to transmit those signals. एक healthy gut can help do that. तो इसमें टर्मरिक, हल्दी, फिश, स्वीट पोटैटो, इसकी रेसिपी हमने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी. कैरेट्स, फर्मेंटेड फूड, एक बार फिर से इडली, डोसा, कांजी, ये वाले, एंड हरी पत्तियां. दिस विल हेल्प अ लॉट इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल. The second is motor development. So any healthy gut will absorb calcium and magnesium more, which are both important for muscles and nerves. So if you give food which is rich in calcium, dahi hai, doodh hai, magnesium, nuts, seeds, green leafy vegetables, and vitamin D, it will help the gut in helping in motor development. Hippocampus, which is important for memory, obviously. Gut sends signals to improve memory, for which again, if you will notice, I'm telling you similar kinds of food. So in the end, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज के लिए एक खाना देना है. You will notice that most of the foods that I told you are similar. और आपको जो आज रेसिपी भी बताएंगे, जो पहले भी बताई हैं, they are most of them are gut friendly recipes. So if you just keep giving them, once a day, that is more than enough. A healthy gut sends signal to improve memory, and foods rich in magnesium, again, nuts, seeds, dark chocolate, and vitamin D, is extremely useful for the gut to help send those signals. Brain fog, suddenly kuch samajh nahi aata, it's like you're lost. That, and to improve learning, a balanced gut will definitely help to reduce that brain fog. And foods like whole grains, fish, and veggies will help. The recipe today will be very interesting for you. Now, the quiz. How much serotonin, the happy hormone, is made in the gut? You can type in the chat box. Yeah, 90%, exactly. Second question. I'll show the question to you, or I can read it out. Which of the following keeps the gut healthy? Fiber-rich food, sugary snack, skipping meals, and processed food. Fiber-rich food, sugary snack, skipping meal, and processed food. Yeah, फाइबर डेफिनेटली. इसका एक रीजन भी मैं आपको बता देती हूँ. फाइबर, स्पेशली प्रीबायोटिक फाइबर, वो फाइबर होता है जो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, जहां पे कि वो एब्जॉर्ब होता है गट में, एंड देन इट बिकम्स द फूड फॉर द बैक्टीरिया, द गुड बैक्टीरिया दैट इज लिविंग इन योर गट, which is why prebiotic fiber or this fiber is extremely important so that our bacteria can survive. Yeah. Okay, I will now ask Rupali ma'am. Rupali, I will pin you or put the spotlight on you.
Let Hello me, everyone. I'll just share the screen. If we have time in the end, I will try to play this video for all of you. It's a 2-minute video. It will help you understand this whole session better. So today we are going to learn about two very beneficial recipes which is going to help in gut function and brain function. But उससे पहले लेट अस नो कि ये रेसिपीज किस तरह से ब्रेन के 5 पार्ट्स को हेल्प करती हैं डेवलप करने में, फंक्शन करने में। फर्स्ट पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो आज जो हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं, एक रेसिपी है बीट रूट इडली की एंड द अदर वन इज स्प्राउटेड लेंटिन पैनकेक्स। तो लेंटिन्स जो होते हैं, स्प्राउटेड लेंटिन्स बेसिकली वो एक रिच सोर्स होते हैं आयरन एंड विटामिन बी का, और ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं फॉर ऑक्सीजन सपोर्ट की सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए ब्रेन को, एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन के प्रॉपर फंक्शनिंग, एक बेटर फोकस, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड एज वी हैव लर्न इन आवर अर्लियर वेबिनार सेशंस कि ब्रेन जो है वो 25% ऑफ एनर्जी है हमारे होल बॉडी की कंज्यूम करता है। तो एनर्जी प्रोवाइड, उसको जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ब्रेन को वो प्रोवाइड करने में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं आयरन एंड विटामिन बी बहुत हेल्प करते हैं। ये इससे ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, फोकस बिल्ड करने में काफी हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट इज एमिगडाला। तो ये जो बीटरूट होता है, बीटरूट इज अ रिच सोर्स ऑफ नाइट्रेट्स। अब आप सोचेंगे नाइट्रेट्स होता क्या है और करता क्या है। बेसिकली नाइट्रेट जो है वो जो ब्रेन के जो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको थोड़ा स्ट्रेच कर देता है, मतलब समझ लीजिए थोड़ा फैला देता है। इससे क्या होता है कि ब्रेन में ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का फ्लो और जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई बॉडी करती है ब्रेन को, उसको अच्छे से स्पेस मिल जाता है। तो ये जो फ्लो होता है काफी स्मूथ हो जाता है, और जब प्रॉपरली ब्रेन को ये सारी चीजें मिलती हैं तो ब्रेन बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। इससे फोकस बूस्ट होता है, बच्चों का जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है बहुत ही क्विक होना चाहिए। कभी कोई एक्टिविटी हुई उसके ऊपर क्या रिएक्शन देना है, अगर ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन की सप्लाई एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई ब्रेन में प्रॉपरली हो रही है तो ये सारी चीजें बच्चे बहुत ही एक्टिवली कर पाएगा। हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो होता है उसमें स्प्राउटेड लेंटिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो होते हैं ये पैक्ड होते हैं जिंक एंड प्रोटीन से, एंड एज वी नो कि प्रोटीन, हिपोकैम्पस जो है वो मेमोरी फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इससे बच्चों का मेमोरी फॉर्मेशन, मेमोरी रिटेंशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज इंसुला। इंसुला में जो ये स्प्राउटेड लेंटिन्स हैं ये एक बहुत ही रिच सोर्स अगेन होते हैं अमीनो एसिड का, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। बच्चों का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग सुनते हैं बच्चे बाहर गए थे और उन्हें समझ नहीं आया कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, बाहर जाते हैं तो वो दूसरे लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते। उनका इमोशनल बैलेंसिंग जो होता है वो डिस्टर्ब होता है जब, तब बच्चों को समझ नहीं आता है कि बाहर किससे कैसे बिहेव करें। घर के लोगों को पहचानते हैं बट नए लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते। तो ये इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बच्चों की बढ़ाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सेरेबेलम। ये जो स्प्राउटेड लेंटिन्स हैं ये एक कॉम्प्लेक्स कार्ब का सोर्स है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेन जो है एक एनर्जी कंज्यूमिंग ऑर्गन है बॉडी का। तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं ये एक सस्टेनेबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि अभी बच्चे ने खाया है तो उसको दिन के काफी देर तक वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता रहेगा ब्रेन को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो फर्स्ट रेसिपी है हमारी बीट रूट इडली। आप लोग जानते ही होंगे, इसमें फाइबर, प्रोबायोटिक्स, आयरन, पोटेशियम एंड कार्ब्स
काफी अच्छी क्वांटिटी में बच्चे को मिल पाते हैं। आपको इडली का बैटर लेना है, 1 कप राइस, 1 कप उड़द दाल, इनको भिगो के रख देना है फॉर 8 to 12 आवर्स। फिर उसको स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेना है। इसमें आप फेनुग्रिक सीड डाल दीजिए, मेथी के दाने, एंड ग्रेटेड बीटरूट। अगर आपको लगता है कि ग्रेटेड बीटरूट शायद बच्चे के मुंह में आएगा और उसको प्रॉब्लम होगी खाने में, या फिर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा अगर उसके मुंह में बीच में कुछ आ रहा है, देन यू कैन मेक अ पेस्ट। आप उसको पेस्ट बना के भी उसमें बैटर में मिक्स कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो आटे का डो होता है और ये जो बैटर्स होते हैं, चाहे वो इडली बैटर हो, डोसा बैटर हो, या पैनकेक बैटर हो, दीज आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू योर किड। इसमें आप कुछ भी मिक्स करके बच्चे को बहुत ही आराम से एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हो। बच्चा सब्जी नहीं खा रहा है, आप प्यूरी बना के दे सकते हो, चाहे वो पालक की हो, चाहे वो पम्पकिन की हो। तो ये बहुत ही अच्छा हमारे पास एक, आप ये बोल सकते हो, दैट इज इट इज अ वेरी गुड टूल फॉर अस। तो इसमें आप ग्रेट करके बीट रूट डाल सकते हैं, घी और थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए मोल्ड को। बाकी आपको पता है कि जब ये आप पेस्ट बना लेंगे, आपको मोल्ड को ग्रीस करना है, देसी घी या कोकोनट ऑयल जो भी आप यूज करते हैं, एंड उसको स्टीम कर लीजिए। ये एक इडली जो है वो डाइटरी फाइबर 1.5 ग्राम प्रोवाइड करती है बच्चे को, आयरन 0.3 to 0.5 mg, पोटेशियम 50 mg to 80 mg, एंड फोलेट 5 to 10 mg। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस से ये बीटरूट इडली कितनी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है आपके बच्चे के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बीटरूट बीटरूट जो होता है वो एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर होता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करना मतलब आप ये समझ लीजिए कि जब ये एंजाइम्स गट में स्टिमुलेट होते हैं तो ये फूड को बहुत ही इजीली ब्रेक डाउन करते हैं। जितना इजीली फूड ब्रेक डाउन होगा उतना अच्छा एंड स्मूथ डाइजेशन होगा बच्चे का। तो ये वात एंड पित्त दोष में काफी हेल्पफुल रहते हैं आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस से। अब मैं आपको बता दूं वात एंड पित्त दोष एक्चुअल में होता क्या है। वात जो होता है वो जनरली ब्रीदिंग से रिलेटेड जो कंसर्न्स होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से या फिर ब्लड सर्कुलेशन से, इन सारी चीजों को शो करता है। जो पित्त होता है वो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इन सारी चीजों को शो करता है। एंड जो ये सॉरी कफ जो होता है वो बच्चे की ग्रोथ, इम्यूनिटी, इन सारी चीजों को मतलब सिग्निफाई करता है। तो ये जो है आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस जो होते हैं इन वर्ड्स के, वात पित्त एंड कफ, ये तीनों चीज ही पूरा आयुर्वेद में अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे तो आयुर्वेद में ये तीनों चीज ही पूरी बॉडी को मूव करने में हेल्प करती हैं। तो फर्मेंटेड बेटर, सॉरी फेनुग्रिक सीड मैंने आपको मिस कर दिया। तो फेनुग्रिक सीड जो होती है उसमें एक म्यूसिलेज, एक कंपोनेंट होता है जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन में एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। मैम ने बताया था ना, थिन हो जाती है लेयर स्टमक एंड इंटेस्टाइन की जब गट में प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं। तो ये जो म्यूसिलेज है ये इस गट लाइनिंग पे एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करता है। तो कभी कभी जैसे आपने मसाले की चीज, स्पाइसी कुछ खा लिया या फिर जंक फूड खा लिया, तो उस, या बच्चों ने खा लिया, तो उस केस में अगर बॉडी कुछ एसिड प्रोड्यूस कर रही है, एसिडिटी हो रही है, तो ये गट को और स्टमक को ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है बचा के रखती है। नेक्स्ट है फर्मेंटेड बटर। तो फर्मेंटेड बैटर किस तरह से, पहली बात तो ये एक रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक होता है, वो सभी को ऑलमोस्ट पता है। बट ये किस तरह से हेल्प करता है। राइस जो होता है वो बेसिकली एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, उसकी कूलिंग प्रॉपर्टी होती है। एंड उड़द की दाल जो होती है वो एक हीटिंग प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है। उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो गर्म होती है, हीटिंग होती है। तो ये जो फर्मेंटेड बैटर है, जब ये आप इसको यूज करते हो तो ये एक डाइजेस्टिव फायर क्रिएट करता है, जिसको आयुर्वेदिक टर्म में अग्नि कहते हैं। दैट इज कि वो हेल्प करेगा फूड को ब्रेक डाउन करने में। उसके बाद ये जो फर्मेंट की जो प्रोसेस होती है इसमें कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड,
प्रोपायोनेटिक एसिड, ये सारे एसिड जो हैं ये गट के पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और बैड बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी प्रिवेंट करते हैं। तो फर्मेंटेड बैटर इज रियली वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। इसीलिए आप देखिए, मैं भी आपको आगे बताऊंगी, साउथ में जनरली ये फर्मेंटेड इडली डोसा बहुत खाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरा है स्प्राउटेड लेंटिल चिला, जो कि रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है, डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करता है, प्रोटीन बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कार्ब्स प्रोवाइड करता है, बी वाइटामिन प्रोवाइड करता है। तो इसको बनाने का देख लेते हैं क्या है इसका इंस्ट्रक्शंस। 1 कप स्प्राउटेड लेंटिल, आप कोई भी ले सकते हैं दाल, मूंग की, मसूर की या मिक्स दाल लेके भिगो दीजिए। और आप चाहें तो उसको थोड़ा सा थिक करने के लिए बेसन या राइस फ्लोर ऑप्शनल है, आप यूज कर सकते हैं। राइस फ्लोर से थोड़ा वो क्रंची हो जाता है, बच्चों को अच्छा लगता है। ग्रेटेड वेजिटेबल्स अनदर बेटर इज द बेस्ट सोर्स टू इंक्लूड वेजिटेबल्स इन योर किड्स डाइट। आप चाहे उसको चॉप करके ऐड कीजिए या फिर प्यूरी बना के ऐड कर दीजिए। तो आप कैरेट ले सकते हो, स्पिनच ले सकते हो, पंपकिन भी ले सकते हो। उसके बाद आप इसमें 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड यूज करेंगे, टर्मरिक पाउडर, ग्रेटेड जिंजर या फिर जिंजर पाउडर। वैसे फ्रेश, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको कोई भी चीज फ्रेश यूज करेंगे दैट इज द बेस्ट थिंग। मैं कभी नहीं मतलब एडवाइस करती कि कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करे, थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, बट फ्रेश इज ऑलवेज बेटर। तो आप फिर उसमें सॉल्ट टू टेस्ट, वाटर एंड घी, कोकोनट ऑयल। तो आप लेंटिल्स को सोक कर दीजिए फॉर 8 to 12 आवर्स, स्प्राउट होने दीजिए उसको 1 to 2 डेज में। जब वो स्प्राउट हो जाए तो उसका एक पतला बैटर बना लीजिए, मतलब कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। एंड उसमें फ्लोर, राइस फ्लोर मिक्स कर दीजिए, वेजिटेबल का पाउडर, वेजिटेबल का सॉरी प्यूरी या फिर ग्रेटेड वेजिटेबल, आपको जो सही लगता है, आपको लगता है जो बच्चा को परेशान ना करे खाने में, वो आप आराम से उसको उस फॉर्म में ऐड कर लीजिए। और पैन को ग्रीस करके उस पे बैटर डालिए, मीडियम टू लो फ्लेम में उसको कुक कीजिए थोड़ी देर के लिए। जब बबल्स आने लग जाए उसको फ्लिप करके गोल्डन वॉर्म होने तक रखिए। एंड कोकोनट चटनी हमने आपको फर्स्ट वेबिनार सेशन में बताया था, फ्लेक्स सीड चटनी, आप वो यूज कर सकते हैं। तो उसके साथ आप इसको सर्व कीजिए। 2.3 ग्राम ऑफ फाइबर इन वन पैनकेक, 1.2 ग्राम ऑफ आयरन, प्रोटीन 4 to 5 ग्राम, कार्ब्स 8 to 10 ग्राम एंड बी वाइटामिन 3 ग्राम्स। मतलब एज वाइज अगर आप देखें तो एक बच्चे का जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसको बड़े आराम से इससे मिल सकता है। एंड गट हेल्थ तो उसकी अच्छी रहेगी ही। अब हम देखते हैं कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स का आयुर्वेदिक सिग्निफिकेंस क्या है। स्प्राउटेड लेंटिन जो होते हैं, आपने सुना होगा कि जैसे कि जनरली हम लोग कहते हैं कि दाल चावल अगर आप बना रहे हो तो पहले भिगो के रख दो, सोक करके रख दो। किस लिए? क्योंकि थोड़ा जल्दी पकते हैं। सिर्फ जल्दी नहीं पकते, उनकी हेवीनेस कम हो जाती है, इसलिए वो जल्दी पकते हैं। तो ये जो स्प्राउटेड लेंटिन्स हैं, अगर आप इसको भिगो देते हो, स्प्राउट आ जाते हैं इसमें, दैट मीन्स कि उसकी हेवीनेस अपने आप ही कम हो गई है। तो डाइजेशन में तो वो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं करेगा, बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है ये। इससे क्या होता है, एक अवेलेबिलिटी बढ़ती है न्यूट्रिएंट की। एंजाइम्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एंजाइम्स जो हैं बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स में भी। तो ये जो वाइटामिन एंड मिनरल्स जो प्रोवाइड होता है, वो गट हेल्थ को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है। एंड वात एंड पित्त दोष, इसको मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है, बच्चों को ये वाली दिक्कतें नहीं होती हैं। कैरेट, कैरेट मधुर एंड शीता, ये दो वर्ड्स जो हैं वो आयुर्वेद से आए हैं। मधुर मीन्स हल्का सा स्वीटनेस, एंड शीता मीन्स कूल, कूल प्रॉपर्टीज रखता है कैरेट। रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, तो फाइबर से तो वैसे ही आपको पता है बहुत ही अच्छा होता है गट के लिए, डाइजेशन के लिए। बेटा कैरोटीन आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप देखेंगे तो आईज के लिए बहुत ही फायदेमंद है बेटा कैरोटीन। फिर स्पिनच है, स्पिनच में काश्य, शीत एंड मधुरा, अगेन रिच सोर्स ऑफ फाइबर एंड आयरन, हेल्दी डाइजेशन एंड गट मोटिलिटी को प्रमोट करता है। तो स्पिनच भी काफी फायदेमंद है। इसके बाद ये जो छोटे छोटे हम लोग स्पाइसेस यूज करते हैं ना, हम इसका सिग्नल, हमें लगता है बस हमने ऐसे डाल दिया क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये सारी चीजें यूज होती हैं, तो हमें लगता है कि ये सारी चीजें ऐसे यूज होती है, बट ऐसे नहीं यूज होती।
क्यूमिन एंड जिंजर जो है वो डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि अगेन फूड जो ब्रेक डाउन होते हैं वो काफी इजीली हो जाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में, उसको भी स्मूथ करने में हेल्प करता है। वात एंड कफ दोष में काफी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब चलिए, ये सब तो चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, बट दो मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रही हूँ जो कि बहुत इजीली आप अपने बच्चे के रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो बटर मिल्क है, छाछ जो हम लोग बोलते हैं। दूसरा, लेफ्ट ओवर रोटीज। आजकल वैसे काफी लोग सुन रहे होंगे आप लोग कि लेफ्ट ओवर रोटीज खाने पे, मतलब पहले लगता था कि नहीं हम बासी नहीं खाएंगे, बट लेफ्ट ओवर रोटीज बहुत फायदेमंद होती है। बटर मिल्क रिच इन प्रोबायोटिक्स होता है, गुड बैक्टीरिया, हेल्दी गट को सपोर्ट करता है, डाइजेशन को रिड्यूस करता है। तो ये जो बटर मिल्क है, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बस दही में थोड़ा सा दही लिया, उसमें आधे आधे से ज्यादा ग्लास पानी मिला दिया और बन गया बटर मिल्क। बट ऐसा नहीं होता है। ये बटर मिल्क जो होता है, ये इसको भी थोड़ा सा टाइम देना होता है। आप देखे होंगे, आपने सुना होगा कि विलेज में जनरली जब खेती बाड़ी में जो लोग जाते हैं सुबह सुबह, वो छाछ ही पी के जाते हैं। वो छाछ ऐसे नहीं बनी होती कि दही में बस आधा ग्लास पानी मिला दिया। उसको बेलोना मेथड से बनाया जाता है। आपने मक्खन रखा और उसको उसमें पानी डाल के छोड़ दिया, फिर उसको नेक्स्ट डे सुबह चर्न किया। चर्न करने के बाद जो घी निकला, वो घी वो लोग तुरंत रोटी के साथ, रात की ही बटी बची रोटी के साथ यूज कर लेते थे। एंड वो जो लेफ्ट ओवर जो वो छा बचता है, वो छाछ होता है, वही होता है असली बटर मिल्क। उसको वो लोग पी के निकल जाते थे उसी बासी रोटी के साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक है। लेफ्ट ओवर रोटीज जो होती है, उनको आप जब रात में रखते हो तो उसमें एक फर्मेटेशन प्रोसेस होता है। वो फर्मेटेशन जो है वो उसको प्रोबायोटिक बनाता है। इसके साथ ही ये जो लेफ्ट ओवर रोटीज होती हैं, इनमें जो एसिड होते हैं वो प्रीबायोटिक भी फॉर्म करते हैं। तो लेफ्ट ओवर रोटीज ये आप बहुत आराम से कर सकते हो अपने बच्चे की डेली लाइफ में। एक अगर आप रोटी उसको लेफ्ट ओवर खिलाते हो तो उसका गट बहुत ही अच्छे तरह से वर्क करेगा, उसको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक सुबह मॉर्निंग में ही मिल जाएगा। तो ये तो दो चीजें बहुत ही इजीली आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप ये रेसिपीज ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वी वुड लव टू सी कि आपकी रेसिपी कैसे बनती है। अगर आप इसमें कुछ और इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, या आपको पता है कि कुछ और अच्छा वर्क करेगा, तो वो भी हमें बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये छाछ पंजाब के साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में ये छाछ बहुत यूज की जाती है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ के साइड में फर्मेंटेड बैटर, इडली डोसा बैटर, ये बहुत यूज किया जाता है। और उड़ीसा में आपने देखा होगा कि एक फकाला भात एक होता है, जो कि वो लोग रात में चावल बनाते हैं और उसमें पानी डाल के ओवरनाइट छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे उसमें नमक एंड प्याज व्याज मिला के खाते हैं। दैट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। इसी तरह कांजी, कांजी बहुत जगह कांजी यूज होती है। आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए अगर आपको ऐसा कुछ पता हो जो आपके रीजन में यूज होता है एज अ प्रोबायोटिक, जो लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और उन्होंने एक रेगुलर अपना डाइट में इंक्लूड कर रखा है वो चीज। आई एम श्योर सबके पास कुछ ना कुछ होगा। हमारा इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स है इन नेचर। तो खाने पीने की चीजें तो हर जगह कुछ अलग ही मिलती हैं और बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपके रीजन में कोई ऐसी चीज है जो कि आप के यहाँ रेगुलर बेसिस पे यूज होती है फॉर प्रोबायोटिक्स। अब नेक्स्ट आपको विष्णु सर एक्टिविटीज बताएंगे जो कि गट एंड ब्रेन फंक्शन में हेल्प करेंगी। थैंक यू एवरीवन। विष्णु सर। Thank you, Rupali. Aarti, you mentioned dahi chura. If you have a recipe for this or maybe some photo, please do share in the group so that others can also try. I will definitely try it with my children. Vishnu, I'm putting you on spotlight. Should I share the screen?
Can you unmute? Yes. Hello, everyone. You can share the screen. Yes. Okay, so it was, I think, so beautifully Vandita ji and Rupala ji have shared on gut-brain connection. So I'm going to share few activities. So usually I come up with activities which has some movement, but for a change this time, I'm going to teach some yoga, pranayam, and asana to work on your gut-brain connection. I'm sure most of the people have been doing yoga, right? So give me a maybe a thumbs up or in the group because I'm not able to see the group. I can stop Yeah, share I if can you see. want. No, I can see again. So whoever is already practicing yoga, if your child is practicing yoga, please give me a thumbs up or yeah, perfect. So I'm going to share 3 exercises, okay, especially for gut, right? So next slide, please. Now for those of you who have joined for the first time, uh, I just again on a high level, I will tell you that there are 2 type of connection, typical and atypical. So typical connection, what happens in a normal person that a brain has a normal flow of connection, and there is an abnormal flow of connection, right? And to enhance that, to make those atypical connection to a typical connection, movement plays a very important role. Movement or any sort of activity. Okay. Next slide. Yeah. Now, I think most of the people, I recently also have attended a seminar on autism, and they said that yoga plays a very important role. But have you ever questioned why? I mean, most of the people say that, or let's say therapists say that, make him or her do a lot of activities and do some yoga also, right? What does that yoga do? It is giving you, because again, it is not a immediate effect. It is a regular practice. Okay. Uh, on the screen, you can see it boosts oxygenation, basically improves oxygen flow to your brain. It reduces stress. It enhances connectivity. It gives you a great pathway, matlab, neural pathway. It balances your energy flow and improve your cognitive function. This is something, a few pointers to know. On a simple way, if I have to tell you, there are 3 main things. It reduces stress. It gives you oxygen to your brain flow. Oxygen flow to your brain, and it balances your energy flow. These 3 things. Now, when a child is so stressed, it affects your gut very badly. In fact, not only a child, anyone. If you take stress, it affects your gut. And especially with children with ASD, they they take stress very often, and it is not in their control to control the stress or anxiety or meltdowns. Correct? So a simple way, let's say it's like a hack. Now, the moment your child is feeling stressed or a meltdown, the basic hack to immediately make them feel a little better is through pranayam or breathing exercise. Okay, next slide. So it reduces cortisol level, which stops the stress hormone. Matlab, it stops the child from taking stress. Right? That is the main idea behind this exercise. There are 2 simple exercises. You can stop sharing. Thank you. Yeah. So you all can do with me. Very simple. Wherever you are, sit down, do with me. The first exercise or the first breathing exercise is known as right and left nostril stimulation in English. But if you want to search for yoga terms, it's known as Surya Chandra Bedi Pranayam. Surya and Chandra Bedi Pranayam. Bedi Pranayams are to activate your Surya channel, Chandra channel, in a simple way, your right channel and your left channel of your body. So when both the channel of your nostril is balanced, then your child or anyone will be calm, less anxious. How do you do that? Very simple. Take your left thumb, close your left nostril,
You inhale and exhale through your right. We are not doing any Anulom Vilom Pranayam. No, it's a very simple breathing technique. Close your left, inhale through your right, exhale through your left. Okay. This to be done in a medium pace, not slow, medium pace, and not too fast also. Like let's say 5 to 7 times on the right. Move to your left. So close your right with your right thumb. Right. So inhale from the right, exhale from the right. Inhale from the left, exhale from the left. 5 to 7 times. Right. You can do this. So 5 to 7 times is one set. It is one set of practice. So you can do this every 2 hours in a day. Like let's say if a child is planning to go for a class or a therapy, and just before the class starts, 5 to 7 times, both the sides, automatically you will feel. See, before, how do you test? Keep a finger. When you keep breathing, one side of your nostril will be more than the other side. Just test it out. Yeah. If you test it out, you will get to know that most of the people's left will be more. Sometimes for some people, right will be more. And if you balance it, automatically you become calmer, or child becomes calmer. And how do you balance it? Very simple. Equal number of breaths in both the sides, 5 to 7 times or 7 to 10 times. Automatically, you can only see an immediate effect. You'll feel good. You'll feel calmer. Yeah, because you have a great flow of breathing, right? And that is reducing your stress, which is giving you less impact to your gut. Got it? That is your first breathing exercise. Any doubt, please put in comments. If everyone is clear, give me a thumbs up, right? Now that is right and left nostril stimulation. Okay, or Surya Vedi, Chandra Vedi Pranayama. The next one is a very interesting one, and it's a research proven one. So recently there was a research done on these 3 exercises for stress, especially for kids with ASD. It showed that there is significant changes in stress. Okay. Now, what is that breathing? And one of the breathing I'm going to teach you, it is 4-7-8 breathing. Okay. Again, this video will be given to you and the PDF will be given. So you will get to know 4-7-8 breathing. Okay. 4, inhalation for 4 counts. 7, hold your breath for 7 counts. 8, exhale for 8 counts. And everything happens through nostril. And there is another technique of mouth that we are not getting at. And maybe in the next session, I will teach you about how we can use NSDR to calm your whole body. But right now it is to work on the gut, and stress affects the gut. So to reduce stress, right? Anxiety, this 4-7-8. Inhale for 4 counts. Hold your breath for 7 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 seconds. That is the pace to count. Not 1, 2, 3, 5, 6. No. 1, 2. How a second goes? 7 seconds, right? Exhale for 8 counts. When you say exhale for 8 counts, got it? Exhale. Let it go. For some people, it'll get over by 6. For some people, it'll get over at 5. But no, you should finish till 8. Right? So when you try to push till 8, you see an immediate effect. Your child will see an immediate effect. They will be calm. Their hyperactiveness will just go down. And again, not in one set. You have to do at least 7 to 10 times in one sitting. Okay. Maybe if you all are watching this, try it once. Inhale for 4 counts. Hold your breath for 7 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale for 8 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Not bad. You'll automatically feel good. You feel like some burden has come down off your head. Correct? Automatically you start smiling sometimes. That's the beauty of 4-7-8 pranayama or 4-7-8 breathing exercise. There's no in Sanskrit, if you want to search this in internet or if you want to search this outside, again, we are giving the material. There is no Sanskrit term for 4-7-8. It is known as Bhastrika Pranayam, but a different variation. But you can search as 4-7-8 breathing exercise, which is great for your stress. Got it? Give me a thumbs up if this is clear. Perfect. And the next one is one yoga asana I wanted to share that every child has to do post their food. Post your breakfast, lunch. Maybe if your child is engaged in multiple activities, let's say post lunch, ideally lunch becomes more heavier. Post that to improve good digestion for your gut. A good post where you child have to sit down is this Vajrasana. Yeah, both the toes should touch each other and sit down. This is your position, hands forward. Sit here and talk to them. Let them engage. Let them use their iPad, whatever they want, they're doing in a daily activity, but just change of position. They will not sit on a couch. They will sit on the floor. Maybe a small mat is necessary. On the knees like this for 1 minute minimum. 1 minute minimum. 2 minutes it can go. 3 minutes. Right? It might hurt. So keep a cushion. That would be great. And this asana is known as Vajrasana. People who've been practicing yoga will know this asana. But the beauty of this asana is great for digestion. Amazing for digestion, amazing for kids, especially for kids, for digestive system, right? And it is great for your gut. And as Vantaji and Rupalji have shared you a complete knowledge on how gut can impact the brain, we're working on gut. Simple exercise to make yourself calmer, to have a great digestion, which is giving you less impact to your brain. Got it? So this is 3 exercises what we have. The first one, what was right and left nostril stimulation, that is Surya Vedi, Chandra Vedi pranayam. The second one's 4-7-8 breathing. And the third is Vajrasana or Thunderbolt pose, which is great for digestion. Got it? All clear? It is very simple. I think from past other sessions, we had a very complicated activities, and this session was a very simple but very effective exercise, right? But I want everyone to practice this. Okay. If at all, if a child is, sitting in Vajrasana, you can take a photo and share it. And practice this for 4-7-8 breathing work for 1 month and see the difference. And if you find a difference, post it in the group and tell, that there's a difference found in my child, right? So please practice this daily and all the resources will be shared, right? Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, Vishnu. Thank you. So everybody, I saw one child in one of the videos of Aditi, I think. Maybe she did the exercise, she did the asana with you. I don't know. So thank you, everybody, for coming. We will be sharing an assessment with you. Kindly fill that. You have a week's time. The reason for you to fill that is so that you definitely practice and learn. For us to also know if whatever we are teaching, are you able to understand or not? And lastly, once again, we will be sharing the date of the next webinar. We were hoping that Saturday would be a freer day for people, but doesn't look like. So maybe we will again try a weekday, probably sometime around 3 o'clock, 3 to 4. Maybe the second session that we did was on a Friday, 3 to 4. Maybe that's the best time for people. Our interest is maximum number of people should come and attend. It is more fun to learn while we are talking versus reading PDF. We will share all the links and all the recipes with you just after the session. Yeah, 4 to 5. Okay, Ja. So would you prefer a weekend or a weekday? Also, before I end, once again,
Thank you to NIPED. Thank you to Tata Power Trust for this opportunity and the Pay Attention program that they are running. I think it's phenomenal. It is giving me a chance to teach you all this, to learn so much from all of you, and I hope that you do walk away with much, much more. So thank you so much. I'll end the session here. If you have any questions, most of you are in the WhatsApp group. Please ask us there, and have a good weekend and take care of your gut. Thank you.